हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और आज हम जो वीडियो देखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड वेरी नाइस स्टोरी। दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी टीन अफशीन स्पाइन सर्जरी। एक पाकिस्तानी लड़की है जिसकी इंडिया में एक स्पाइन सर्जरी हुई है, उसके बारे में ये वीडियो है। लेट्स सी दिस वीडियो और फर्दर इस पर बात करेंगे। वैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाते हैं, और आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग आते हैं, बिकॉज इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट क्वालिटी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होता है। सो लेट्स सी दिस वीडियो और फिर इस पर बात करते हैं। मीनवाइल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हिट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइमली मिल सकें। लेट्स सी द वीडियो। Afshin Gul, a 13-year-old Pakistani girl who spent most of her life with her neck twisted at a 90-degree angle, has undergone life-changing surgery at Delhi's Indraprasth Apollo Hospital. Okay. Afshin has never been to school or played with friends because of this condition. She also afflicted with cerebral palsy and had a rare condition that made her neck bend and her head sit at a 90-degree angle. Her father, who was a laborer, died in 2020, but 2 years before his passing, there was a ray of hope for the family. Afshin's eldest brother, Muhammad Yaqub Kumbar, heard about spine surgeon Dr. Rajgopalan Krishnan at Delhi's Apollo Hospital. डॉक्टर कृष्णन के बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उस लड़के का नाम था महेंद्र आयरवार। तो उसकी जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियो थी सर्जरी की। तो उसको मैंने देखी, फिर डॉक्टर से रब्ता किया मैंने। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि कैसे सर्जरी होगी, कैसे इसका इलाज होगा, कैसे इसका वीज़ा होगा। वो हमें जो है सारा कुछ डॉक्टर ने गाइड किया। तो डॉक्टर ने गाइड किया, फिर हम चले आए। Yaqub raised funds through crowdfunding for Afshin's treatment. Finally, Yaqub and Afshin flew to India in November last year and met Dr. Krishnan. Actual diagnosis in the neck was a chronic, neglected, severe atlantoaxial dislocation. That is the C1 vertebra along with the skull tipping over the C2 vertebra, dropping to the left side and rotated 90 degrees. So I don't think I have seen such a severe fixed deformity. And she had spinal cord compression and cervical myelopathy. Cervical myelopathy means compression of the spinal cord leading to neurological dysfunction or deficit in the upper and lower limbs, depending on where the site of compression is. Dr. Krishnan diagnosed Afshin with atlantoaxial rotatory dislocation. First stage was putting her in halo gravity traction. So she had a ring round the skull with pins going into the skull and weights attached to it. When she was lying in bed, weights attached to a bed pulley system, and then when she sat in a wheelchair, weights going through an overhead pulley. So we kept her in traction with gradual distraction and monitoring her clinical and neurological status. Nothing went wrong, for which we are very thankful. After a few weeks, we repeated the scan, which showed that the rotation had diminished, decreased significantly. So from 90 degrees, it had reduced about 60 degrees. And the problem is the dropped head didn't correct as much as I would have wanted. I expected this because in a growing child, after 12 years, the bones adapt. This applies to any part of the body. So she had bony adaptive changes which prevented adequate repositioning of the skull on C2 and the trunk. Second step was the second surgery to release the sternocleidomastoid muscle, which takes origin from the sternum and the inner or medial 1/3 or half of the clavicle collarbone, and then inserts in the mastoid process behind the ear. You can actually see it contracting when I turn the head. So I modified conventional procedures. Rather than just releasing them at the origin and the insertion, I took out segments, a couple of centimeters top and bottom. The idea behind this was we can't stop the dystonia, but remove the fulcrum so that even if the lever arm keeps contracting, it can't pull on anything. It's been detached above and below.
So scans later showed that the deformity was further corrected. So I decided to proceed with surgery, which happened on the 28th of February. I had a long discussion with the family on the Sunday before the surgery. I told them the possible risks. She could die during the surgery, she could die afterwards. She could have infection, she could have further neurological deficit, but over and above all that, the risk of death was high. They understood, and they wrote me a message which I think touched my heart. The family asked, if she does die, how will we get the body back to Pakistan? And I decided I'll do the best to make sure she doesn't die on the table. The surgery on February 28 lasted over 6 hours, and by the end of her neck was straightened. Although she will have to wear a brace for some time for the neck to stabilize. Over the next few months, Dr. Krishnan and his team will monitor Afshin once a week through Skype. वीडियो से हमें पता चलता द पावर ऑफ इंटरनेट, कैसे आज के टाइम में एक इंटरनेट के थ्रू एक लाइफ चेंजिंग चीज़ हो गई उनके लिए. एंड दैट वाज ब्रिलियंट. एक तो वीडियो वाज फुल ऑफ मेडिकल टर्म्स, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली हमें समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये बड़ी एक टेक्निकल टर्म्स में डॉक्टर ने जो कुछ एक्सप्लेन की, बट जो बातें कुछ समझ में आई वो अपना पूरा एक प्रोसीजर, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट किया वो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस सारे प्रोसेस को हैंडल किया. एंड अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि हाउ रिस्की ऑल ऑफ दिस थिंग वाज. बट स्टार्ट से एंड तक अगर हम देखें, बल्कि सारी बातों से पहले आई विल से थैंक यू टू द इंडियन डॉक्टर्स के इस एटलीस्ट हमारी ये मेडिकल की फील्ड्स या कुछ ऐसी अब डिपार्टमेंट बचे हैं जिसमें वो कंट्रीज़ के आपस के रिलेशंस को कंसिडर किए बगैर सिर्फ एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के तौर पर चीज़ें देखी जाती हैं और उसका इफेक्ट लिया जाता है. जैसे इस वीडियो में उन्होंने बताया कि यूट्यूब से उन्होंने वीडियो देख के डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया एंड डॉक्टर एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर एंड सारी डिटेल्स बताएंगे कैसे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है. एंड वो सारी गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो करके फंड रेज करके एंड देन ही केम इन और वो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हुआ. उन्होंने अपना टाइम दिया एंड ऑल दिस थिंग्स. तो आई वुड से थैंक यू एंड टू ऑल द डॉक्टर्स आउट देयर, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब. और पाकिस्तान से इंडिया में ट्रीटमेंट की, जैसे मैंने पहले बात की, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए, बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर better arrangements in terms of health facilities plus economy of the treatment as compared to other countries. So ये एक इकोनॉमिकल एंड बेटर सोल्यूशन अवेलेबल है इस रीजन के लोगों के लिए और जिससे सारे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट में, ख़ासतौर पे इंडिया से, और यहाँ पे भी बहुत सारी इस सिलसिले में इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है. बट दिस वाज रियली नाइस. और मेरे ख्याल से इस तरह की ये जो स्टोरीज़ हैं ये दोनों कंट्रीज़ को टू ब्रिंग दम टुगेदर, जो लोगों में एक ब्रिज का काम करती हैं. ऑब्वियसली जो फैमिली यहाँ से इंडिया गई, जिन्होंने वो सारा प्रोसेस में रहे, वो जो पाकिस्तान आएंगे तो वो बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ और पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आएंगे. सिमिलरली जो जिन लोगों से वहाँ मिले उनका एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा उनकी सोच में एंड ऑल दोज थिंग. सो इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, इम्प्रेसिव. और प्लस वो जो उन्होंने सेंटेंस बोला कि जब मैंने उन्हें हाई रिस्क का बताया तो उन्होंने जो बात की, दैट वाज समवट इमोशनल. सो आई थिंक वी हैव लर्न कि हम इंटरनेट को पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना पावरफुल ये चीज़ हो सकती है. आप लोगों की वीडियो कैसी लगी और आपके जो भी कमेंट हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और कोई वीडियो जो नेक्स्ट आप चाहते हैं मैं देखूं उसकी सजेशन दे दें. सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.